बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Ya Allah, Ya Rahman, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Manan, haqqqa manina, wafuqna bi kulliyan fi masa'ina. وحبتنا النبراس بحب كل الناس اغدق لنا إحساس يا هادينا يا الله يا رحمن حقق مانينا وفقنا بكل يان في مساعينا يا الله يا منان حقق مانينا وفقنا بكل يان في مساعينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا بكل في مساعينا يا الله يا منان حقق أمانينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا ربي شكرا شكرا يا ربي شكرا أنا بصلاتي يسلم وبالسادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا ربي شكرا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن شكرا يا ربي شكرا شكرا يا ربي شكرا. मोहतरमा टीचर मिसिस कैफ, बच्चों को सोने से पहले क्या करना चाहिए बयान फरमा रही हैं। इनकी ये तकरीर मुलाहिज़ा फरमाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to talk about the manner of sleeping in Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. There are so many favors of our Lord that we cannot deny. Sleep is a huge favor for us from Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Naba, Allah says, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Night is for sleeping and day is for working. Sleep makes our body, including our brain, get rest. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not like staying awake after Isha for no good reason. Sleeping early and waking up early keeps a person healthy. Some of the sunnah sleeping are going to sleep early. First, we say Bismillah and make wuzu before sleeping. Whoever makes wuzu before going to sleep, Allah sends an angel down for that person and the angel asks for forgiveness for that person all night long. Before going to the bed, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to dust off his bed and bed sheet 3 times with his hands. Then he would lay down. The second thing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do was turn to his right side facing the Qibla with his right hand under his chin and left hand on his left leg. Then he would start the zikr of Allah. He would start with Ayatul Kursi. A Bukhari hadith is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever recite Ayatul Kursi before going to sleep, there is nothing between that person and Jannah except for death. Whoever recite Ayatul Kursi 1 time before going to sleep, an angel is sent to sit next to the person all night and shaitan cannot come close to that person. Next,
Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite Surah Ikhlas 3 times, Surah Nas 3 times, Surah Falaq 3 times, blow it on his hand and rub his hands all over his body, starting from his head, and then recite the last 2 ayah of Surah Baqarah from Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. From here to here, fansurna alal qawmil kafirin. Whoever recite the last 2 ayah of Surah Baqarah before sleeping, these 2 ayah protect that person from all kinds of evil, jinn, shaitan. Then read Allahumma bismika amutu wahya and Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 34 times. If person wakes up due to bad dream, then they should say A'udhu billahi minash shaitanir rajeem and blow on the left shoulder 3 times. And if you can get out the bed, make wuzu and pray 2 rakat namaz nafil and you go and sleep again. Some sunnah apply surma 3 times in each eyes. This is for men and women. And keep miswak under your pillow. Close the door of your house and Ya Allah, make our children, our family, and sister, brother, all the relative and friends, and all the Muslim Ummah. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. MCAF Hidayat. अरे भाई ये MCAF हिदायत आखिर है क्या? अरे जनाब ये एक चैनल है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिब्का। आई फील फ्रीडम इन इस्लामिक रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सानिया और मैं हूँ अनिस्बा और हमें ज़रूरत है इस्लाम की तालीमात को समझने की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिफ। या एग्जैक्टली, वी नीड get the knowledge of Islam and understand ourselves. Assalamualaikum. We are the students of Misas Vision Ethnic Education System और देखते रहिए MCAF हिदायत TV। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सित्रा ताहिर और आज मैं आपको एक ज़बरदस्त चैनल जिसका नाम है MCAF हिदायत, बिल्कुल इस चैनल का नाम MCAF हिदायत है। इस पे बेहतरीन इस्लामिक कंटेंट अपलोड होता है और कहते हैं जितना हम मज़हब इस्लाम के बारे में जानते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, हदीस फैलाते हैं, नाते सुनते हैं, तिलावत करते हैं तो उतना ज़्यादा रूह को सुकून मिलता है और हमारे गुनाह भी धुलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में और लाइक कीजिए इसकी वीडियोस को और जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि मैं इस चैनल को फुली सपोर्ट करती हूँ और इंशाल्लाह आप मेरी आवाज़ इस चैनल पर बहुत जल्द सुनेंगे। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा MCAF हिदायत TV को।